Welcome to Behind the Make, where we take you behind the scenes to explore how everyday things are made. Today, we're diving into the fascinating world of cement production, a process that has shaped our cities and infrastructure for centuries. From the selection of raw materials like limestone and clay to heating, grinding, and packaging, we'll uncover the craftsmanship and science behind the material that holds our world together. But before we get started, don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you never miss a new episode. Now, let's get into it. Cement and concrete are often used interchangeably. They are distinct materials. Cement is actually one of the primary components of concrete, serving as the crucial binding agent that holds together water and aggregate. The process of making concrete begins with cement production, which is essential for ensuring the strength and durability of the final product. There are various types of cement, but the most commonly used is ordinary Portland cement. It was named by its inventor because its colour resembled the stone quarried on the Isle of Portland in Dorset, England. The primary raw materials for cement production are limestone and clay, which are extracted from quarries using blasting or heavy machinery. Once extracted, the raw materials are transported to a crushing plant, where they are broken down into smaller pieces and then mixed in precise proportions to form what is known as a raw meal. This raw meal is then transferred to a mill, a large rotating cylinder, where it is ground into a fine powder. Grinding ensures uniformity and improves the efficiency of the chemical reactions that follow. The powdered raw meal is then heated in a preheater tower using hot gases from the kiln, which partially decomposes the limestone, converting it into calcium oxide, lime, through a process called calcination. The preheated and pre-calcined raw meal then enters a rotary kiln, a long cylindrical furnace where the temperature reaches approximately 1,450 degrees Celsius. Inside the kiln, the raw materials undergo a series of complex chemical reactions and sintering, ultimately forming small, marble-sized nodules called clinker. This clinker consists of compounds such as calcium silicates, aluminates, and ferrites, which are key to cement's binding properties. Once discharged from the kiln, the clinker is cooled rapidly using air to maintain its quality and prevent unwanted crystal formations. The cooled clinker is then finely ground in cement mills, along with gypsum and other additives such as fly ash, slag, or pozzolana. Once the cement is produced, it undergoes rigorous chemical and physical testing in specialized laboratories to ensure it meets industry standards. After passing these tests, the cement is ready for transportation to concrete manufacturing facilities. The next major component of concrete is aggregate, which makes up approximately 75% of the final mixture. Aggregate consists of both gravel and sand, with sand filling in the gaps between the larger gravel particles to create a stronger, more consistent mixture. Using well-graded aggregate, a balanced combination of coarse and fine particles, reduces the amount of cement required, making the process more cost-effective. Another key element in concrete production is the use of admixtures. These specialized chemicals enhance the properties of concrete in various ways. Plasticizers improve workability, making it easier to mold and place without segregation or excessive water bleeding. Accelerators speed up the setting process, while retarders slow it down, allowing for more control depending on environmental conditions. Since concrete has limited tensile strength, chemical additives and reinforcing fibers, such as stainless steel, glass, or carbon fibers, can be used to enhance its performance and durability. Once all raw materials are ready, the concrete production process begins. The first step is to carefully measure the required proportions of cement, aggregate, admixtures, and water based on the desired strength and characteristics of the final product.
Concrete mix design is a specialized field that determines the optimal ratios of these materials to achieve specific structural requirements. Building codes also provide guidelines for the correct mix proportions for different types of construction projects. After measuring the ingredients, they are thoroughly mixed to form a uniform blend. Traditionally, this was done manually using shovels on a flat surface, but today, concrete mixers are used to automate and speed up the process. During mixing, water is added gradually, combining with cement to form a paste that binds the aggregates together. This reaction, known as hydration, generates heat and continues over time, gradually strengthening the concrete. The workability of the concrete is checked at this stage, and adjustments can be made by adding more water or dry materials if necessary. Once the mixture reaches the desired consistency, it is transported to the construction site and placed into molds or formwork. Depending on the project, concrete can be poured directly or transported using pumps and conveyors. Care must be taken to prevent segregation, where larger aggregates separate from the rest of the mix. After placement, the concrete must be compacted to remove air pockets and voids, ensuring a dense, strong final structure. This is typically done using vibrators, tamping, or rolling. Once compacted, the concrete undergoes curing, a critical process that involves maintaining adequate moisture and temperature to allow hydration to continue. Curing can be done by keeping the surface damp or covering it with curing membranes, plastic sheets, or blankets. The curing period varies depending on the type of concrete and desired strength, often lasting several days to weeks. Once the concrete has cured sufficiently, finishing techniques can be applied to achieve the desired surface texture and appearance. These may include smoothing, leveling, troweling, or applying decorative finishes. Given its versatility, durability, and cost-effectiveness, concrete remains the most widely used construction material in the world. And there you have it, the incredible journey of how cement is made. From extracting raw materials to grinding, heating, and final testing, every step in the cement production process requires expert craftsmanship, precision, and innovation. We hope you enjoyed this behind-the-scenes look at how cement is made. If you found this video informative, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell to stay updated with our latest episodes. See you in the next video. The art of brick-making dates back to around 4000 BCE in Mesopotamia, where the first sun-dried mud bricks were crafted. Over time, various civilizations, including those in the Indus Valley, ancient Egypt, China, Greece, and Rome, refined and adapted brick-making techniques. Today, advancements in technology and automation have made bricks an integral part of modern construction. The process begins as powerful quarry machines dig deep into the earth, revealing shale layers. This exposed shale is left to the elements for several years, allowing nature to soften it, making it ready for easier processing gradually. At the factory, gigantic stone wheels crush the shale into a fine powder. Larger fragments are then separated and sent for further grinding. The finely ground shale is mixed with water in a pug mill, forming a thick, malleable paste ready for shaping. The paste is then pushed through an extruder, shaping it into a long, continuous form called a slug. Inside, pins create holes to lighten the bricks. As the slug moves through, the extruder trims away the rough outer layer, revealing the smooth surface that will become the brick's finished face. A large blade then cuts through the extended slug, skillfully slicing it into 5-foot sections, ready for the next stage of production. Next begins the careful task of stacking the freshly formed bricks. A specialized machine carefully lifts and arranges them as moisture begins to evaporate. To accelerate this drying stage, the bricks are kept in a dryer for approximately 48 hours.
Their next destination, the kiln. A massive oven heats the bricks to temperatures ranging from 800 to 1100 degrees Celsius, or 1472 to 2012 degrees Fahrenheit, depending on the type of clay and desired quality. After 36 hours of intense heat, workers perform a thorough quality check. They measure and weigh samples to confirm they meet exact specifications. Since bricks are designed to absorb a controlled amount of water to work effectively with mortar, a worker tests their absorbency by breaking a brick in half and weighing it before and after a 24-hour soak. The difference in weight reveals the brick's water absorption rate. Once the batch is approved, the bricks are stacked and prepared for sale on the market. Renowned for their durability, bricks resist rot, fading and warping, unlike some other materials. They also offer excellent energy efficiency, absorbing heat to keep homes cool in the summer and retaining warmth during the winter. Thanks for watching another episode of Frankie How's It Made. See you in the next video. Bye for now. Steelmaking has a rich history spanning thousands of years. It began around 1800 years ago in ancient China, where the earliest known methods of creating steel were developed. Using high-carbon techniques, Chinese blacksmiths created a material stronger and more durable than iron. Fast forward to the Middle Ages, steel production spread to other parts of the world. The Damascus steel of the Middle East became legendary for its strength and sharpness, used to craft swords and weapons that were unmatched in quality. However, steelmaking as we know it took a monumental leap in the mid-19th century with the Bessemer process. Developed by Henry Bessemer, this revolutionary method used air to remove impurities from molten iron, making steel cheaper and more accessible. This innovation paved the way for the modern era of steel, transforming industries from construction to transportation. From the Eiffel Tower to towering skyscrapers, steel became the backbone of global development. Today, advancements in technology continue to refine steelmaking, ensuring this vital material remains at the heart of human progress. So, how is it made? Let's dive in. Steelmaking often starts with a powerful magnet capable of lifting up to 5 tons of scrap metal. This metal, once collected, will undergo a transformation into steel bars or pipes. The scrap is then placed into a large basket, which weighs itself a hefty 30 tons, yet has the capacity to hold up to 60 tons of metal. Now, the metal is prepared to be melted in a furnace reaching temperatures of about 1600 degrees Celsius, hot enough to liquefy the metal. It is heated by electrodes and natural gas burners. The contents of the basket are poured into the furnace, where the metal pieces mix with the molten steel, which remains at the bottom. At these extreme temperatures, the 60 tons of metal will liquefy in roughly 1 hour. This process triggers a reaction while an aeration system works to vent the smoke generated. Next, the cover is placed on the furnace, and the ventilation system, including the fume hood and exhaust fans, is activated to manage the fumes. This system draws out the smoke produced during the melting process. As the metal melts, impurities within the liquid rise to the surface, where they form a layer. At this point, a technician collects a sample of the steel and assesses its chemical structure. Next, a supersonic oxygen lance is used. The lance injects oxygen into the molten steel, lowering its carbon content, homogenizing the mixture, and accelerating the melting process. A ladle is placed beneath the furnace to receive the molten steel. The liquid steel flows smoothly from the furnace into the ladle. The ladle is capable of holding up to 115 tons of molten steel. An overhead crane, capable of lifting 180 tons, transports the ladle filled with steel. Additives are then introduced to achieve the desired steel composition. At this point, the electrodes are taken out of the furnace ladle,
The pouring nozzles of the distributor are opened, allowing the molten steel to flow through the 4 pouring holes into the molds. As it enters the molds, the steel rapidly cools and begins to solidify. Steel billets are produced in lengths that can vary widely, typically ranging from several meters to over 10 meters. The billets are sent to the flattener, where powerful rollers press them, forming them into the required shape and size. As the production process nears completion, the steel shapes move along a conveyor at a controlled pace. Once they reach their target dimensions, they are placed on a cooling bed, ensuring they cool evenly across their entire length. And there you have it, the incredible process that transforms raw materials into one of the most vital building blocks of our modern world. From towering skyscrapers to everyday tools, steel continues to shape how we live, work, and build. Thanks for watching another episode of Behind the Make. We'll see you in the next video. Welcome to another episode of Behind the Make. Today, we're diving into the fascinating world of tyre production, a process that has revolutionized transportation and keeps us moving every day. From the selection of raw materials like rubber, carbon black and steel to shaping, curing and packaging, we'll uncover the craftsmanship and science behind the tyres that support our vehicles and keep our world moving. But before we get started, don't forget to like, subscribe and hit that notification bell so you never miss a new episode. Now, let's get into it. In 1839, Charles Goodyear accidentally discovered the process of vulcanizing rubber, revolutionizing tyre manufacturing. His breakthrough sparked a series of developments, leading to the creation of air-filled tyres in the early 20th century. Today, over 250 million new tyres are produced annually in factories around the world. Before a tyre can be mass-produced, engineers use specialized software to design and test its structure. This software simulates the performance of the tyre's tread and other design features. It generates a 3D color image of the tyre, calculating how various stresses will affect the design's durability. Once the design is finalized, production begins. A modern tyre is made up of 10 to 15 components, including natural and synthetic rubbers, chemicals, and carbon black. These materials are transported by rail to factories, where they are stored until needed. Computer systems measure and mix the rubber and chemicals in precise batches before they are sent into a Banbury mixer. This machine has 2 intermeshing rotors that knead and shear the mixture, blending the materials together. Before mixing begins, the Banbury mixer chamber is heated to soften the rubber, making it more pliable. The rotors rotate in opposite directions, creating the shearing and kneading action that combines the rubber with the other ingredients. Different formulations are used for various parts of the tyre, resulting in a rubbery dough that is rolled into sheets for further processing. For the tyre's ply, a fabric made of polyester unrolls into a machine called a calender, which applies warm rubber to both sides. This creates a rubber-coated fabric that reinforces the tyre. Rubber alone isn't durable enough for a tyre, so numerous cotton cords are added to the fabric to provide air channels and strengthen it. The tread, the outer layer of the tyre that touches the road, is made from a specially designed rubber compound. The tread rubber is produced using 3 distinct formulations. Extruders shape 3 strands of rubber, which are then combined into one continuous strip. The factory uses paint rollers to apply different coloured stripes to the rubber, marking the ingredients for easy identification. A blade cuts the tread rubber to the required length. Next, the tyre is assembled. It begins with a worker placing bead rings on a rotating drum. The inner liner, a thin rubber layer that prevents air loss and moisture infiltration, is applied. This liner also helps maintain proper tyre inflation. The corded ply, which provides structural integrity and resistance to internal pressure, is placed on top of the liner. Bead,
beads, which provide strength and shape to the tyre, are added next. Inflated bladders roll the rubber around the beads on both sides, retracting once complete. The sidewalls, made of rubber, are then applied to protect and add flexibility to the tyre. They also contain essential information like tyre size, brand, and other specifications. At this point, the tyre's inner structure is formed. The outer shell is created separately, starting with steel or other reinforcing belts wrapped around another drum. These belts enhance the tyre's strength, puncture resistance, and stability, especially at high speeds. The number of belts and their angles vary depending on the tyre's design. Narrow rubber strips are applied over the belts using a computerized system to ensure even tension. The tread is then added to complete the tyre assembly. The inner and outer parts of the tyre are joined using a transfer ring, and compressed air is used to inflate the tyre, causing all the layers to bond together. The tyre is now known as a green tyre, an uncured tyre that lacks the tread pattern. Until 1909, tyre assembly was done by hand. However, Goodyear's invention of the tyre building machine automated the process, increasing production from just 6 to 8 tyres per worker per day to 20 to 40 tyres, depending on the type. The green tyre is then placed inside a large mould for curing. The mould resembles a giant clam, which opens to reveal a flexible balloon called a bladder. As the mould closes, the bladder fills with steam, causing it to expand and shape the tyre. The steam heats the tyre to 280 degrees Fahrenheit, and the pressure forces the rubber into the mould's intricate design. During this curing process, the rubber undergoes vulcanization, a chemical reaction that turns it from a sticky, weak substance into a durable, elastic material. After the curing process, any excess rubber is trimmed, leaving a clean and smooth tread surface. The tyre is then inspected for defects and abnormalities to ensure quality control and safety. When a new tyre design is created, numerous tyres are taken from the production line for destructive testing. Some are cut open to examine air pockets, while others undergo tests to assess puncture resistance or simulate high-speed performance. The tyres are also tested for mileage by spinning them on metal drums under various conditions. Once the tyres pass all inspections and tests, they undergo finishing processes, such as adding a protective coating, marking the sidewalls with the brand name, size and specifications, and applying any necessary labelling. The completed tyres are then packaged for distribution. Tyres are typically stored in warehouses before being shipped to retailers or automotive manufacturers. The global tyre market reached a volume of $314.07 billion in 2022, driven by growing demand in developing regions and advancements in technology. This market is expected to continue growing as the global population increases. And there you have it, the incredible journey of how tyres are made. From designing the structure to mixing materials, moulding and final testing, every step in the tyre production process requires expert craftsmanship, precision and innovation. We hope you enjoyed this behind-the-scenes look at how tyres are made. If you found this video informative, don't forget to like, subscribe and hit the notification bell to stay updated with our latest episodes. See you in the next video. Glass, a creation from nature's abundance, is crafted from readily available raw materials, making it an environmentally friendly alternative to metal or plastic. Its recyclability is virtually limitless, whether in vibrant coloured forms or crystal clear varieties. The art of glassmaking revolves around a carefully balanced recipe of natural elements, with silica sand, soda ash, and limestone taking centre stage. Silica sand, making up about 45% of the mixture, forms the foundation. Soda ash, contributing 15%, ensures the silica melts uniformly, while limestone, at roughly 10%, adds strength and durability to the finished glass product.
This mixture is further enriched with recycled glass, known as cullet, seamlessly integrated into the manufacturing process. Precision is key, as factory equipment measures and feeds specific amounts of these materials into a furnace. Over 24 hours at a blistering 1,500 degrees Celsius, the ingredients transform into a molten liquid with a honey-like consistency. This molten glass is then shaped into cylindrical globes, destined to become bottles or jars. These globes are guided by scoops to troughs leading to bottle and jar forming machines. Inside a preliminary mold, a glob of molten glass takes the form of a parison, a smaller version of the final bottle. These parisons are then transferred into blow molds, where compressed air shapes them into the desired bottle design. For coloured bottles, the mixture is enriched with small quantities of iron, sulphur and carbon, while the process for clear glass requires precise adjustments. Specialised moulds may include recessed designs, resulting in raised insignias on the bottle's surface. The bottles pass through flames to prevent rapid cooling, avoiding cracks caused by thermal shock. Gradually, they enter an annealing layer, where controlled cooling relieves stress within the glass. Lubrication ensures their smooth journey through inspection and packaging. The bottles then undergo stringent automatic inspections. Cameras and sensors meticulously check for imperfections, verifying dimensions, thread integrity for screw caps, and overall quality. A final visual inspection completes the quality assurance process. One of the unique advantages of glass production is its ability to incorporate up to 90% cullet into the mix. This addition allows the glass to melt at a lower temperature, leading to significant energy savings, up to 2.5% for every 10% of cullet used. A sustainable incentive indeed, highlighting the eco-friendly journey from sand to shelf. Until next time, stay curious and we'll see you again on Frankie, How's It Made? Behind the Make में आपका स्वागत है, जहां हम आपको पर्दे के पीछे ले जाकर यह दिखाते हैं कि रोजमर्रा की चीजें कैसे बनाई जाती हैं। आज हम सीमेंट उत्पादन की आकर्षक दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसा प्रक्रिया जिसने सदियों से हमारे शहरों और बुनियादी ढांचे को आकार दिया है। चूना पत्थर और मिट्टी जैसी कच्ची सामग्रियों के चयन से लेकर उन्हें गर्म करने, पीसने और पैक करने तक, हम उस कारीगरी और विज्ञान को उजागर करेंगे जो हमारे विश्व को एक साथ जोड़े रखता है। लेकिन शुरू करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी नई एपिसोड मिस न करें। तो आइए शुरू करते हैं। सीमेंट और कंक्रीट को अक्सर एक जैसा समझ लिया जाता है, लेकिन ये दो अलग अलग सामग्री हैं। सीमेंट वास्तव में कंक्रीट का एक मुख्य घटक होता है, जो पानी और एग्रीगेट, कणिकीय पदार्थ को बांधने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है। कंक्रीट बनाने की प्रक्रिया सीमेंट उत्पादन से शुरू होती है, जो अंतिम उत्पाद की मजबूती और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होती है। सीमेंट के कई प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट (OPC) है। इसके आविष्कारक ने इसका नाम इसीलिए रखा क्योंकि इसका रंग इंग्लैंड के डॉर्सेट में स्थित पोर्टलैंड द्वीप से निकाले गए पत्थर से मिलता जुलता था। सीमेंट उत्पादन के लिए मुख्य कच्ची सामग्री चूना, पत्थर और मिट्टी होती है, जिन्हें खदानों से विस्फोट या भारी मशीनरी की मदद से निकाला जाता है। निकाले जाने के बाद इन कच्ची सामग्रियों को क्रशिंग प्लांट, पिसाई संयंत्र में ले जाया जाता है, जहां उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और फिर सटीक अनुपात में मिलाया जाता है, जिसे रॉ मील, कच्चा मिश्रण कहा जाता है। इसके बाद इस रॉ मील, कच्चे मिश्रण को एक मिल, बड़े घूर्णन सिलेंडर में भेजा जाता है, जहां इसे बारीक पाउडर में पीसा जाता है। पीसने की प्रक्रिया से मिश्रण की एकरूपता बनी रहती है और बाद की रासायनिक प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ती है। इसके बाद पिसे हुए रॉ मील को प्रीहीटर टावर में गर्म किया जाता है, जहां भट्टी, किल्न से निकलने वाली गर्म गैसें इसे गर्म करती हैं। इस प्रक्रिया में चूना पत्थर आंशिक रूप से विघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कैल्सिनेशन, दहन अपघटन
प्रक्रिया कहा जाता है। प्री हीट और प्री कैल्सिन किया हुआ यह रॉ मील फिर एक रोटरी किल्न, लंबा बेलनाकार भट्ठी में प्रवेश करता है, जहां तापमान लगभग 1450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। भट्टी किल्न के अंदर कच्ची सामग्री कई जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं और सिंटरिंग एकीकरण प्रक्रिया से गुजरती है, जिससे अंततः छोटे संगमरमर के आकार के क्लिंकर नामक टुकड़े बनते हैं। क्लिंकर में कैल्शियम सिलिकेट्स, एल्यूमिनेट्स और फेराइट्स जैसे यौगिक होते हैं, जो सीमेंट की बांधने बाइंडिंग काज की विशेषताओं के लिए आवश्यक होते हैं। भट्टी से बाहर निकलने के बाद क्लिंकर को हवा की सहायता से तेजी से ठंडा किया जाता है, ताकि इसकी गुणवत्ता बनी रहे और अवांछित क्रिस्टल संरचनाओं का निर्माण न हो। इसके बाद ठंडे किए गए क्लिंकर को सीमेंट मिलों में बारीक पीसा जाता है, जहां इसमें जिप्सम और फ्लाई ऐश, स्लैग या पोज़ोलाना जैसे अन्य योजक एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। जिप्सम विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह सीमेंट के जमने, सेट होने के समय को नियंत्रित करता है। सीमेंट के उत्पादन के बाद इसे विशेष प्रयोगशालाओं में कठोर रासायनिक और भौतिक परीक्षणों से गुजारा जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह उद्योग मानकों को पूरा करता है। इन परीक्षणों में सफल होने के बाद सीमेंट कंक्रीट निर्माण इकाइयों तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। कंक्रीट का अगला मुख्य घटक एग्रीगेट कणिकीय सामग्री है, जो अंतिम मिश्रण का लगभग 75% हिस्सा बनाता है। एग्रीगेट में बजरी, ग्रेवल और रेत सैंड दोनों शामिल होते हैं, जहां रेत बड़े बजरी कणों के बीच की खाली जगहों को भरकर मिश्रण को अधिक मजबूत और समान बनाती है। संतुलित अनुपात में मोटे और बारीक कणों वाला अच्छी गुणवत्ता का एग्रीगेट उपयोग करने से सीमेंट की आवश्यक मात्रा कम हो जाती है, जिससे यह प्रक्रिया अधिक लागत प्रभावी, कॉस्ट इफेक्टिव बनती है। कंक्रीट उत्पादन में एक और महत्वपूर्ण तत्व एडमिक्सचर मिश्रण योजक का उपयोग है। ये विशेष रसायन कंक्रीट के गुणों को विभिन्न तरीकों से सुधारते हैं। प्लास्टिसाइजर कंक्रीट की कार्यशीलता को बढ़ाते हैं, जिससे इसे आसानी से ढाला और लगाया जा सकता है, बिना अलगाव या अत्यधिक पानी के रिसाव के। एक्सीलरेटर्स जमने की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जबकि रिटार्डर्स इसे धीमा करते हैं, जिससे पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अधिक नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि कंक्रीट की तन्यता ताकत सीमित होती है, रासायनिक योजक और स्टेनलेस स्टील, ग्लास या कार्बन फाइबर जैसी मजबूत करने वाली सामग्री का उपयोग इसकी प्रदर्शन क्षमता और स्थायित्व को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब सभी कच्ची सामग्री तैयार हो जाती है, तो कंक्रीट उत्पादन प्रक्रिया शुरू होती है। पहला कदम होता है सीमेंट, एग्रीगेट, एडमिक्सचर और पानी की आवश्यक मात्राओं को ध्यानपूर्वक मापना, जो अंतिम उत्पाद की इच्छित मजबूती और विशेषताओं के आधार पर तय की जाती है। कंक्रीट मिक्स डिजाइन एक विशेष क्षेत्र है, जो इन सामग्रियों के आदर्श अनुपातों का निर्धारण करता है, ताकि विशिष्ट संरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। निर्माण संहिता, बिल्डिंग कोड भी विभिन्न प्रकार के निर्माण परियोजनाओं के लिए सही मिश्रण अनुपातों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। सामग्री मापने के बाद उन्हें समान मिश्रण बनाने के लिए अच्छी तरह से मिलाया जाता है। पारंपरिक रूप से ये काम फावड़ों का उपयोग करके एक समतल सतह पर मैन्युअली किया जाता था, लेकिन आजकल कंक्रीट मिक्सर का उपयोग इस प्रक्रिया को स्वचालित और तेज बनाने के लिए किया जाता है। मिश्रण के दौरान पानी को धीरे धीरे डाला जाता है, जो सीमेंट के साथ मिलकर एक पेस्ट बनाता है, जो एग्रीगेट्स को एक साथ जोड़ता है। इस प्रक्रिया को हाइड्रेशन कहा जाता है, जो गर्मी उत्पन्न करती है, और समय के साथ यह प्रक्रिया जारी रहती है, जिससे कंक्रीट की मजबूती धीरे धीरे बढ़ती है। इस चरण में कंक्रीट की कार्यशीलता की जांच की जाती है, और अगर आवश्यक हो तो अधिक पानी या सूखी सामग्री मिलाकर समायोजन किया जा सकता है। एक बार जब मिश्रण इच्छित स्थिरता तक पहुंच जाता है, तो उसे निर्माण स्थल पर भेजा जाता है और मोल्ड्स या फॉर्मवर्क में डाला जाता है। परियोजना के अनुसार कंक्रीट को सीधे डाला जा सकता है या पंप और कन्वेयर के माध्यम से परिवहन किया जा सकता है। ध्यान रखा जाना चाहिए कि सेग्रीगेशन
जब बड़े एग्रीगेट्स बाकी मिश्रण से अलग हो जाते हैं से बचा जाए। स्थापना के बाद कंक्रीट को संपीड़ित किया जाना चाहिए ताकि हवा के झीले और रिक्त स्थान हटाए जा सके, जिससे अंतिम संरचना घनी और मजबूत बने। ये आमतौर पर वाइब्रेटर्स, टैंपिंग या रोलिंग का उपयोग करके किया जाता है। एक बार संपीड़ित होने के बाद कंक्रीट क्योरिंग प्रक्रिया से गुजरता है, जो एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें उचित नमी और तापमान बनाए रखा जाता है ताकि हाइड्रेशन प्रक्रिया जारी रह सके। क्योरिंग को सतह को गीला रखकर या उसे क्योरिंग मेम्ब्रेन, प्लास्टिक शीट्स या कंबल से ढककर किया जा सकता है। क्योरिंग की अवधि कंक्रीट के प्रकार और इच्छित मजबूती के आधार पर भिन्न होती है, जो आमतौर पर कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक होती है। एक बार जब कंक्रीट पर्याप्त रूप से क्योर हो जाता है तो फिनिशिंग तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है ताकि इच्छित सतह की बनावट और उपस्थिति प्राप्त की जा सके। इसमें समतल करना, लेवलिंग, ट्रवेलिंग या सजावटी फिनिश लागू करना शामिल हो सकता है। अपनी लचीलापन, स्थायित्व और लागत प्रभाविता के कारण कंक्रीट दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला निर्माण सामग्री बना हुआ है। और यह था सीमेंट बनाने की अद्भुत यात्रा। कच्ची सामग्री निकालने से लेकर पीसने, गर्म करने और अंतिम परीक्षण तक कंक्रीट उत्पादन प्रक्रिया के हर चरण में विशेषज्ञता, सटीकता और नवाचार की आवश्यकता होती है। हमें उम्मीद है कि आपको सीमेंट बनाने की इस पर्दे के पीछे की झलक पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे नवीनतम एपिसोड्स के अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। मेक में आपका स्वागत है, जहां हम आपको पर्दे के पीछे लेकर जाते हैं ताकि आप जान सकें कि रोजमर्रा की चीजें कैसे बनती हैं। आज हम टायर निर्माण की अद्भुत दुनिया में गोता लगाएंगे, एक प्रक्रिया जिसने परिवहन को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया और जो हमें हर दिन चलते रहने में मदद करती है। कच्चे सामग्री जैसे रबड़, कार्बन ब्लैक और स्टील के चयन से लेकर आकार देना, क्यूरिंग और पैकेजिंग तक, हम उन कारीगरी और विज्ञान का खुलासा करेंगे जो उन टायरों के पीछे हैं, जो हमारे वाहनों का समर्थन करते हैं और हमारे विश्व को गति प्रदान करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आप कभी भी नया एपिसोड मिस न करें। अब आइए शुरू करते हैं। 1839 में चार्ल्स गुडयर ने रबर को वल्कनाइज करने की प्रक्रिया का पता लगाया, जिसने टायर निर्माण में क्रांति ला दी। उनकी यह खोज एक विकास की श्रृंखला की शुरुआत बनी, जिसके परिणामस्वरूप 20वीं सदी की शुरुआत में हवा से भरे टायरों का निर्माण हुआ। आज दुनिया भर के कारखानों में हर साल 250 मिलियन से अधिक नए टायर बनाए जाते हैं। टायर के बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले इंजीनियरों द्वारा इसके संरचना को डिजाइन और परीक्षण करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर टायर के ट्रेड और अन्य डिजाइन विशेषताओं के प्रदर्शन का अनुकरण करता है। ये टायर की 3D रंगीन छवि उत्पन्न करता है और ये गणना करता है कि विभिन्न दबाव कैसे डिजाइन की मजबूती को प्रभावित करेंगे। डिजाइन अंतिम रूप में आने के बाद उत्पादन की प्रक्रिया शुरू होती है। एक आधुनिक टायर 10 से 15 घटकों से बना होता है, जिसमें प्राकृतिक और सिंथेटिक रबड़, रासायनिक तत्व और कार्बन ब्लैक शामिल होते हैं। इन सामग्रियों को रेल द्वारा फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, जहां इन्हें आवश्यकता अनुसार संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम रबर और रासायनिक तत्वों को सटीक बैचों में मापते और मिलाते हैं। फिर इन्हें बैनब्री मिक्सर में भेजा जाता है। इस मशीन में 2 आपस में जुड़ी रोटर्स होती हैं, जो मिश्रण को गूंथने और शीयर करने का काम करती हैं, जिससे सामग्री आपस में मिल जाती है। मिक्सिंग शुरू होने से पहले बैनब्री मिक्सर चैम्बर को गर्म किया जाता है ताकि रबर को नरम किया जा सके, जिससे वह अधिक लचीला हो जाता है। रोटर्स विपरीत दिशा में घूमते हैं, जो मिश्रण को गूंथने और शीयर करने का कार्य करते हैं, जिससे रबर अन्य सामग्री के साथ मिल जाता है। टायर के विभिन्न हिस्सों के लिए अलग अलग सूत्रों का उपयोग किया जाता है,
जिसके परिणाम स्वरूप एक रबर जैसा आटा बनता है, जिसे आगे की प्रोसेसिंग के लिए शीट्स में लुढ़काया जाता है। टायर के प्लाई के लिए पॉलिएस्टर से बना एक कपड़ा एक मशीन में अनरोल होता है, जिसे कैलेंडर कहा जाता है, जो दोनों साइडों पर गर्म रबर लगाता है। इससे एक रबर कोटेड कपड़ा बनता है जो टायर को मजबूत करता है। रबर अकेले टायर के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होता, इसलिए कपड़े में कई कॉटन की डोरियां जोड़ी जाती हैं, जो हवा के चैनल प्रदान करती हैं और इसे और मजबूत बनाती हैं। ट्रेड, जो टायर की बाहरी परत है जो सड़क से संपर्क करती है, एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए रबर यौगिक से बनाई जाती है। ट्रेड रबर 3 अलग-अलग सूत्रों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। एक्सट्रूडर्स 3 रबर की धारियों को आकार देते हैं, जिन्हें फिर एक निरंतर पट्टी में मिलाया जाता है। फैक्ट्री पेंट रोलर्स का उपयोग करके रबर पर विभिन्न रंगीदार पट्टियां लगाती है, ताकि सामग्री की पहचान आसानी से की जा सके। एक ब्लेड ट्रेड रबर को आवश्यक लंबाई में काटता है। इसके बाद टायर को असेंबल किया जाता है। ये प्रक्रिया एक कर्मचारी द्वारा बीड रिंग्स को एक घूर्णनशील ड्रम पर रखने से शुरू होती है। फिर एक पतली रबर की परत, जिसे इनर लाइनर कहा जाता है, जो हवा के रिसाव और नमी के प्रवेश को रोकती है, लगाई जाती है। ये लाइनर टायर की सही इन्फ्लेशन को बनाए रखने में भी मदद करती है। फिर कॉर्डेड प्लाई, जो संरचनात्मक अखंडता प्रदान करती है और आंतरिक दबाव का प्रतिरोध करती है, लाइनर के ऊपर रखी जाती है। इसके बाद बीड्स, जो टायर को ताकत और आकार प्रदान करते हैं, जोड़े जाते हैं। फुलाए गए ब्लेडर्स रबर को दोनों तरफ बीड्स के चारों ओर लपेटते हैं और एक बार प्रक्रिया पूरी होने पर वे संकुचित हो जाते हैं। फिर रबर से बनी साइड वॉल्स लगाई जाती है, जो टायर की सुरक्षा और लचीलापन जोड़ती है। इन साइड वॉल्स में टायर के आकार, ब्रांड और अन्य आवश्यक विवरण भी होते हैं। इस बिंदु पर टायर की आंतरिक संरचना बन चुकी होती है। बाहरी आवरण को अलग से बनाया जाता है, जो एक अलग ड्रम के चारों ओर स्टील या अन्य मजबूती देने वाले बेल्ट्स लपेटकर शुरू होता है। ये बेल्ट्स टायर की ताकत, पंक्चर प्रतिरोध और स्थिरता को बढ़ाते हैं, खासकर उच्च गति पर। बेल्ट्स की संख्या और उनके कोण टायर के डिजाइन के अनुसार बदलते हैं। संगठित बेल्ट्स के ऊपर संकरे रबर स्ट्रिप्स लगाए जाते हैं, जिसमें एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि तनाव समान रूप से वितरित हो। इसके बाद टायर के बाहरी भाग पर ट्रीड, सड़क से संपर्क करने वाला हिस्सा जोड़ा जाता है, जिससे टायर का संपूर्ण निर्माण पूरा हो जाता है। आंतरिक और बाहरी हिस्सों को एक ट्रांसफर रिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है और संकुचित हवा का उपयोग टायर को फुलाने के लिए किया जाता है, जिससे सभी परतें एक साथ जुड़ जाती हैं। अब टायर को ग्रीन टायर के रूप में जाना जाता है, जो एक अपरिपक्व टायर है जिसमें ट्रीड पैटर्न नहीं होता है। 1909 तक टायर असेंबली हाथ से की जाती थी। हालांकि गुडियर द्वारा टायर बिल्डिंग मशीन का आविष्कार करने से प्रक्रिया स्वचालित हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन 6 से 8 टायर प्रति कर्मचारी प्रतिदिन से बढ़कर 20 से 40 टायर प्रति कर्मचारी प्रतिदिन हो गया, जो टायर के प्रकार पर निर्भर करता है। ग्रीन टायर को फिर एक बड़े मोल्ड में रखा जाता है ताकि उसे क्योर किया जा सके। यह मोल्ड एक विशाल क्लैम के जैसा दिखता है, जो खुलता है और अंदर एक लचीला बैलून, जिसे ब्लैडर कहा जाता है, दिखाई देता है। जैसे ही मोल्ड बंद होता है, ब्लैडर में भाप भर जाती है, जिससे यह फैलता है और टायर का आकार लेता है। भाप टायर को 230 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर देती है और दबाव रबड़ को मोल्ड के जटिल डिजाइन में दबा देता है। इस क्योरिंग प्रक्रिया के दौरान रबर वल्कनाइजेशन, विकृत रासायनिक प्रक्रिया से गुजरता है, जो इसे चिपचिपी और कमजोर सामग्री से मजबूत और लचीले पदार्थ में बदल देती है। क्योरिंग प्रक्रिया के बाद किसी भी अतिरिक्त रबर को ट्रिम कर दिया जाता है, जिससे एक साफ और स्मूथ ट्रेड सतह मिलती है। फिर टायर की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसमें किसी भी दोष या असमानताएं देखने के लिए निरीक्षण किया जाता है। जब एक नया टायर डिजाइन तैयार किया जाता है, तो उत्पादन लाइन से कई टायरों को नष्ट करने के परीक्षण के लिए लिया जाता है। कुछ टायरों को खोला जाता है
ताकि वायु के बुलबुले एयर पॉकेट्स की जांच की जा सके, जबकि अन्य टायरों पर पंचर प्रतिरोध का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण किए जाते हैं या उच्च गति पर प्रदर्शन का अनुकरण किया जाता है। टायरों की मीलर माइलेज भी जांची जाती है, जहां उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में धातु के ड्रमों पर घुमाया जाता है। एक बार जब टायर सभी निरीक्षणों और परीक्षणों को पास कर लेते हैं, तो उन्हें फिनिशिंग प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जैसे कि एक सुरक्षा कोटिंग जोड़ना, साइड वॉल पर ब्रांड नाम, आकार और विनिर्देशों को चिह्नित करना और आवश्यक लेबलिंग लागू करना। इसके बाद तैयार टायरों को वितरण के लिए पैक किया जाता है। टायरों को आमतौर पर गोदामों में संग्रहित किया जाता है, फिर उन्हें खुदरा विक्रेताओं या ऑटोमोटिव निर्माताओं को शिप किया जाता है। 2022 में वैश्विक टायर बाजार ने 314 अरब 7 करोड़ 7 लाख का वॉल्यूम हासिल किया, जो विकासशील क्षेत्रों में बढ़ती मांग और प्रौद्योगिकी में सुधारों से प्रेरित था। इस बाजार के बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि वैश्विक जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इस तरह टायर बनाने की अद्भुत यात्रा पूरी होती है। संरचना डिजाइन करने से लेकर सामग्री मिश्रण, मोल्डिंग और अंतिम परीक्षण तक, टायर उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक कदम में विशेषज्ञ कारीगरी, सटीकता और नवाचार की आवश्यकता होती है। हमें उम्मीद है कि आपको टायर बनाने की इस पर्दे के पीछे की यात्रा का आनंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे नवीनतम एपिसोड्स के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।